Hi, I'm Neha, a girl in the midst. I work a 9 to 5 job with being a full time adventurer and a traveler. I will take you on some enchanted roads and majestic places which you might have never seen before, exploring and curating one of a kind experience along the way. तो चलिए शुरू करते हैं एक ब्रांड न्यू सफर टू द मिस्टिक पार्वती वैली. I welcome you all to this brand new series of the Parvati Valley, exploring with me, your girl Neha. And today we are here in the beautiful Parvati Valley. Have a look. So in this video, I will tell you guys कि why I chose Parvati Valley for my next expedition और यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं. तो I'll tell you all about that in detail. तो कहीं मत जाइए and fasten your seat belts. Today we are going to Parvati Valley. हम अभी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं. 1 घंटे में हम नाहन से आ रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है और हम वापस जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश. सो या आई विल टेल यू द बैक स्टोरी लेटर व्हाई इज दैट हैपनिंग. So basically it was my birthday on the 5th of November and which is why we were in Dehradun to celebrate it with my best friend. तो हमें उसके बाद नेक्स्ट डे ही निकलना था, मतलब 6th of November को हमें पार्वती वैली के लिए निकलना था. तो we had to take the route from Dehradun to Barshani and we'll give you all the details now. और देहरादून से कसौल आने के लिए आपको एक रूट लेना पड़ता है. यूजुअली देयर आर 2-3 रूट्स दैट यू कैन टेक. यू कैन आइदर टेक द सहारनपुर रूट एंड गो टुवर्ड्स चंडीगढ़ एंड देन टेक द हाईवे टू हिमाचल, और यू कैन टेक द पौंटा साहिब रूट which is way beautiful and you will touch down at Chandigarh and take the same highway. और बोलते हैं कि वो रूट ज़्यादा छोटा है तो हमने वही रूट लिया था which starts from Dehradun and then you take the Paonta Sahib Ambala highway to reach Chandigarh and then you take the normal Himachal highway. हमने ये वाला रूट इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि ये थोड़ा छोटा था. यहाँ पे प्लेन ड्राइविंग ज़्यादा थी, हिल ड्राइविंग कम थी, बिकॉज हम नाहलगढ़ की तरफ से आते हैं तो उधर से आपको इतना हिल ड्राइविंग नहीं करना पड़ता. हम 13 आवर्स में पहुँच गए थे विच आई थॉट that was very good for the distance we were covering, which was about 452 kilometers from Dehradun to Kasol. Hey, so we have just crossed Sundarnagar, but it will take around 4.5 hours for us to reach the place. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. I know you told your friend The moment you'll step foot in Mandi, the views will change drastically and so will the roads. Look at this. strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. So located in the Kullu district of Himachal Pradesh, Parvati Valley had always seemed so mysterious to me. मैंने हमेशा से यहाँ के बारे में इतनी mythical stories सुनी है about how it was created, where some say that Lord Shiva actually meditated in this valley for around 3,000 odd years and took the form of that of a naga sadhu. After ages, Lord Shiva opened his eyes and looked around at this untouched, beautiful landscape and named it after his beloved wife, Parvati.
मुझे कमेंट्स में बताना नीचे किसको पहले से पता था इस पूरी स्टोरी के बारे में। Another thing, I am sure most of you may have already known of the famous Malana town. Well, I'm not talking about the highly rated Malana cream, but where the people of Malana and what they believe in. They believe that they are the descendants of Alexander the Great, and they still follow the ancient Greek system of law and constitution. I could just go on and on about these stories. They are so captivating to me. इन स्टोरीज के साथ आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द वैली इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, फ्रॉम द रोड्स विच आर लेस ट्रेवल्ड टू द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन पार्वती वैली, स्ट्रेचिंग फ्रॉम भुंतर टू स्पीति. यू कैन इमेजिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन अ वीक्स टाइम. सो here are the places which landed in my itinerary that I will show in the Parvati Valley series. तो बात करते हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन की इन पार्वती वैली. तो हम जा रहे थे शिला विलेज. कहाँ है शिला विलेज? लेट मी शो यू. वेल, 13 किलोमीटर दूर फ्रॉम मणिकरण, समवेयर हियर इज द विलेज कॉल्ड शिला. बहुत लोगों को इस विलेज के बारे में नहीं पता है बिकॉज इट इज़ नोवेयर ऑन द मैप. यू हर्ड इट राइट. और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं. बट पहले थोड़ा शिला विलेज के बारे में. सो दिस विलेज इज ट्रूली अ साइट ऑन इट्स ओन, consisting of tall pine trees all around and delicious meadows with the Parvati river flowing on its side. तो अब इसके रूट की बात करते हैं और देखते हैं आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं. वेल, आपको बसेस मिल जाएंगी जो मणिकरण या कसौल से आप ले सकते हैं टूवर्ड्स द बरशैनी रोड. Before actually reaching Barshani, before approximately 5 kilometers, there'll be a downward road that will be going to the Shilla bridge. Now this bridge actually leads to a hydroelectric plant, which is the NHPC Limited Parvati 2 hydroelectric plant. उसके थोड़े और आगे चलेंगे approximately 1 kilometer. That is where the road will take you. इसके बाद आपको हाइक करना पड़ेगा इस विलेज को पहुंचने के लिए. अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का हाइक है ये, और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसा रास्ता था इसका. With less than 50 houses, this village is an absolute paradise for any nature lover. You are actually surrounded with the mountains. This village is unlike any experience you will have in the Parvati Valley. You will get an absolutely chill atmosphere everywhere. आपको थोड़े कैफ़ेज भी मिलेंगे यहाँ पे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड. सो यूजुअली पीपल विल गो टू बरशनी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे फेमस ट्रैक्स शुरू होते हैं, जैसे आपके तौश विलेज का, कलगा फुलगा विलेजेस का, खीर गंगा जा सकते हैं आप वहाँ से. तो यूजुअली दे डोंट रियली गो टूवर्ड्स द शिला विलेज. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको शांति पसंद है, यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस इन पार्वती वैली, तो आप डेफिनेटली यहाँ आइए. हमें शीला विलेज पहुंचने में एक्चुअली शाम हो गई थी. इनफैक्ट अंधेरा हो गया था बुरी तरह से. 7 बजे हम पहुंचे थे शीला विलेज. और दिन के टाइम पे ये जितना सुहाना लग रहा है, कि खूबसूरत लग रहा है ये रास्ता, रात में ट्रस्ट मी उतना ही डरावना लग रहा था. देयर वर नो लाइट्स कहीं पे भी. हम अपने फ़ोन के लाइट से वी वर वॉकिंग इन सच अ नैरो पाथ. कई बार तो मैं गिरते हुए बची हूँ. ऑनेस्टली आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस रास्ते पे रात में हाइक करें. डेफिनेटली नॉट.
सुबह पता चला कि इतना वर्थ था यहाँ पे आना, बिकॉज when you see and experience the true essence of Parvati Valley being completely secluded amongst this magnificent mountains, I mean, that was an amazing feeling. So this was our day 1 in the Parvati Valley. Do tell me in the comments that how excited are you now to visit the Shilla village, and I will come back soon in the next episode exploring more of Parvati Valley. In the meantime, do not forget to like this video, subscribe to my channel, help your girl grow here. Follow me on Instagram. My handle is girl_in the midst. So see you next week. You keep traveling and ciao.